हेलो गेमर्स, तो आज से स्टार्ट होने वाली है एक नई सीरीज जिसका नाम है लाइफ इज स्ट्रेंज अकॉर्डिंग टू द अबाउट सेक्शन ऑफ दिस गेम। यह एक चॉइस प्ले गेम है जहां पर हमारे चॉइसेस गेम की स्टोरी पे इम्पैक्ट करेंगे और इसमें मल्टीपल एंडिंग है जो कि हमारे चॉइसेस के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल कैरेक्टर होने वाली है जिसका नाम है मैक्स कॉलफील्ड, जो कि मेरे लिए एक डाउन पॉइंट है। मुझे फीमेल कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं फीमेल कैरेक्टर से उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता हूँ जितना कि एक मेल कैरेक्टर से होता हूँ। और इस फीमेल कैरेक्टर की एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्लोई प्राइस एंड एक पूरी स्टोरी इन दोनों फ्रेंड के बीच इन्वॉल्व है। और ये सब बातें चूते हुए गेम के अबाउट सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ लोग का कहना है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल गेम है जिसमें बहुत लोग गेम के एंडिंग तक रो देते हैं। खैर, ये बात 2015 और 16 के बीच की है और अभी चल रहा है 2024। बाय द वे, ये था गेम का ओवरऑल व्यू और हमें बहुत सारी चीज़ें गेम के बारे में एक्सप्लोर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। हमारा एंट्रेंस अभी गेम के अंदर हो चुका है। टैप टू स्टार्ट न्यू गेम। ओ भाई, क्या ही साउंड इफेक्ट है। अरे गेम है बवाल। शायद से ये है अपनी प्यारी सी मेन प्रोटैगनिस्ट। एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक सब भाई लाजवाब है। अभी थोड़ा बहुत हमको सिखा रहे हैं कंट्रोल। टैप एनी और मूव। अच्छा, इसका कंट्रोल भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। समझा भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ये देखो, खुद से कहती है अगर मैं लाइट हाउस के पास पहुंच जाती हूँ तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगी और लाइट हाउस यही है। और यहाँ पे काफी ज्यादा तूफान आया हुआ है। तूफान नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, सुनामी लहर या टोर्नेडो आया है। चलो अभी लाइट हाउस तक तो पहुंच चुका हूँ, देखता हूँ अभी क्या होता है। Holy shit. अरे इसके ऊपर तो लाइट हाउस। ए भाई, ब्लैक स्क्रीन कर दिए। लाइट हाउस गिरने ही वाला था हमारे ऊपर। ये क्या था? मैं तो किसी एक क्लास में हूँ। चलो सिनेमैटिक सीन वॉच करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like. एक गाइस ना फोटोग्राफी का क्लास चल रहा है और यहाँ पे जो मुझे दिखा लगता है वो मेरा कोई सपना था, क्योंकि इसने जैसे सर उठाया तुरंत एक क्लास में थी। She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America, and there was honesty about the economic conditions of the era.
but a beauty. पूरा instrument. फोटोग्राफी का क्लास चल रहा है, सच बता रहा हूँ मुझे बहुत कम ही समझ आ रहा है। मीन्स यहाँ पे फोटो को कैसे क्लिक्स किया जाता है, कौन सबसे अच्छा फोटो क्लिक्स कर रहा था, उन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man, and his famous self-portrait. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. देखो इसने कोई एक फोटो क्लिक किया है और ये जेफरसन को दिखाने चाहती है जो कि इसके क्लास टीचर हैं, और ये सोचे दिखाऊं या ना दिखाऊं। Are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. ये अपना कैमरा है, A picture to prove I'm still रुको here. Plus, it's perfect for my portfolio. एक फोटो क्लिक करते हैं। Or selfie expression. Sorry. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? तो यहाँ पे टीचर ने पूछा है फर्स्ट सेल्फ पोर्ट्रेट्स इमेज किसने क्लिक किया या किसने जनरेट किया, यही मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू आर आस्किंग मी, आई डिड नो। देखो यू आर आस्किंग मी अगर करता हूँ, ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आई डिड नो मैं जानता हूँ। I did know, but I kind of forgot. भूल गई। You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. ए मुझे ट्रोल मत कर, बहुत पछताएगी विक्टोरिया। The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. ओके, इसी के साथ इसकी फकिंग क्लास यहीं पर एंड होती है। I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. तो देखो यहाँ पर एक एवरीडे कॉन्टेस्ट हीरो नाम का प्रतियोगिता होने वाला है जिसमें हमको पार्टिसिपेट करना होगा, और पार्टिसिपेट करने वाले को कुछ नहीं करना है, बस एक फोटो सबमिट करना है। लीव द क्लास, रुको एक्सप्लोर करते हैं। Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest new. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. ओके, एक कैमरा के स्पेसिफिकेशन के बारे में जिसको मैं बिल्कुल भी रीड नहीं करने वाला हूँ। ये कौन है? केट। पेपर वॉल देखते हैं क्या है पेपर वॉल पे। लुक। Now I wish I wouldn't have read this. Dear Kate, we love your porn video. XOX Blackwell Academy? अबे क्या है ये? कुछ तो प्रॉब्लम है केट के साथ इस कॉलेज में या इस एकेडमी में। ये क्या है देखता हूँ। Looks like somebody was already working on this. Cool. ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग कोई सा भी हो, बट एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे देखकर ही लग रहा है। अभी केट से बात करते हैं क्या? Hi, Kate. Oh, hi, Max. I hope I did not impress you. You seem quiet today. हाँ यही पूछते हैं, you seem quiet today. You seem quiet today. Just thinking too much.
Victoria has already won. Want to go grab a cup of tea? दो ऑप्शन है यहाँ पर, मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ want to go grab a cup of tea. चलो. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. तो यहाँ पे कैट से बात करते हैं कि हम लोग चाय पीते हैं, बट वो मना कर देती है, कहती है मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है. ये क्या है? This might make a cool shot. रुको इसको ध्यान से देखता हूँ. रेचल एम्बर फॉर एवर. फोटो लेते हैं, जब फोटो का ऑप्शन है. देखो मेरा मिशन है क्लास को लीव करने का, तो फटाफट लीव करते हैं. क्या बोलते हो, इनसे बात की जाए? चलो बात करते हैं. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. विक्टोरिया तो Never चुप ही let one बैठा कर. photography's future stars avoid handing in her picture. क्या क्वेश्चन किया था? I did not have any time. Do I have to? क्वेश्चन क्या था इसका? चलो इसी पे क्लिक I करते हैं. didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. तो देखो ये कहता है कि तुम्हें भी एवरीडे हीरो कॉन्टेस्ट में फोटो को सबमिट करना चाहिए, लेकिन ये बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है. फिर मिस्टर जेफरसन इसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम भी फोटो को सबमिट करो. चलो अभी क्लास को लीव करते हैं. एक मिनट. Man, he ये even तो has the टीवी है. best plasma HD TV for a class monitor. Can't. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Everyday hero find out enter to win. Everyday heroes photo contest. Submit an image the best represents yourself or others in heroic action. Deadline October 9, 2013. The winner will fly to San Francisco and represent their school in the National Everyday Heroes competition at JT Guest Gallery on October 11, 2013. You may submit one image on approved paper for consideration for those 18 and under. Apparent permission from must be included with the image. तो ये रहा एवरीडे हीरोज फोटो कॉन्टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी कि जो इसको विन करेगा वो सैन फ्रांसिस्को सिटी में जाएगा. वहाँ पर एक कोई प्लेस है, वहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया जाएगा. यही सारी बातें साथ हैं. और उसका एज 18 प्लस रहेगा तब भी चलेगा, 18 से कम रहेगा तब भी चलेगा. चलो अभी क्लास को लीव करते हैं. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying a You hundred. always Welcome to the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture. I feel like you have to pass because Max wants everybody to see how hip she is to show your Blackwell. She plays it so sharp. इतना ज़्यादा शोर है Time इधर. out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. ओके अभी ये खुद से कह रहे थे कि मुझे मुंह धोने के लिए बाथरूम जाना है, तो मुझे बाथरूम जाना होगा, बट किधर है बाथरूम? साइंस रूम है, इधर मेरे को जाना है नहीं. मिसिंग पर्सन पोस्टर है क्या है? These missing persons posters are popping up everywhere. Missing from Arcadia Bay, date missing Monday, April 22. Other age 19 years old, height 5'5", weight 110 IVS, hair blonde, eye hazel, tattoo on calf,
of a dragon and star on the inside of the left right. Rachel Amber age 19. Please call with any information. Call Arcadia Bay Sheriffs. अरे काम करता हूँ ना, लेकिन कॉल करने का कोई फायदा नहीं। मीन्स मैं टाइम पास ये हो रहा था, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। वैसे भी ज्यादातर जो नॉर्थ अमेरिकन मूवी होते हैं ना, जैसे इसमें स्टार्टिंग में 555 लग गया ना, उसमें भी ऐसे 555 लगा देते हैं जहाँ पे नंबर शो करने की जरूरत होती है। ये पोस्टर किसका है? अरे पोस्टर पोस्टर मुझे देखना है। I shouldn't be so stingy with my blood. Blood, give it up. Blackwell Academy needs fresh blood. Join our Halloween blood drive on October 13, 2030. Best costume wins a prize. Go to the bathroom and splash your face. But एक सेकंड, बाथरूम किधर है? अच्छा ये रहा बाथरूम, देखो चमक रहा है, देखो। चलो बाथरूम में एंटर करते हैं। Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Go to the bathroom and splash your face. Okay. मुझे अपना फेस धोना है, मीन्स चेहरे को। Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. अरे इसने तो अपनी इमेज मीन्स जो फोटो क्लिक किया था एवरीडे हीरो कॉन्टेस्ट के लिए, उसको फाड़ दी। When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. ये सब क्या है इधर, देखते हैं। I'm good to flow. Thanks. पोस्टर पे क्या है, रेड करते हैं। Must drive people to have sex. Abstinence makes the heart grow fonder. You can still love and learn without sex. Time is on your side, so is common sense use it. Kate to for God. अरे केट को यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है किसी वीडियोज को लेकर, मीन्स उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अभी आगे मुझे मिशन क्या करना है। ए भाई ये क्या हुआ? चलो मैं उधर से किसी तरह तो बैक हो गया। ये बटरफ्लाई को क्या करना है? फोटो क्लिक करते हैं एक। एक मिनट, गर्ल्स वॉशरूम में कैसे आ गया? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just ओके, सिनेमैटिक सीन के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! भाई साहब ये क्या है इधर? Whoa. What the fuck? अबे How? ये भी इसका एक सपना था। I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand.
And then I was back here. लगता है ना इसका थोड़ा सा मेंटल हेल्थ खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है। Now Kate is being hassled again. और वही चीजें दोबारा से रिवाइंड हो रही है जो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था। अब इसका तो कैमरा ही टूट गया। Man, I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller. Can I actually reverse time? Go, Victoria. टैप टू रिवाइंड Because of her images of hopeless faces. रिवाइंड करते हैं। ओ टाइम को यहाँ पे हम लोग रिवाइंड कर सकते हैं, ऐसा अबाउट सेक्शन में लिखा था जिसको मैंने शायद से इंट्रो में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम को भी रिवाइंड कर सकते हैं। I did it. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly captured the human human condition time in black machine. and white? Anybody? तो देखो भाई, ऐसा हुआ कि हम लोग जाते हैं वॉशरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए, बट उसी बीच एक लड़का वहां पे एंटर करता है। वो किसी चीज के लिए परेशान था और वो खुद को वहां पे समझा रहा था। इसी बीच एक लड़की एंटर करती है जो कि उसे ब्लैकमेल कर रही थे। वो कह रहे थे तुम स्टूडेंट्स को ड्रग्स देते हो, मैं सबको बता दूंगी। इसके लिए वो कुछ पैसों को डिमांड कर रहे थे और लड़का पैसा देने से साफ साफ मना कर रहा था। और इसी बीच उन दोनों बहस हुई। बहस में गन निकालता है और गन का ट्रिगर दब जाता है और लड़की वहां पे मारी जाती है। और फिर इस मेन प्रोटेगनिस्ट में जो हमारा कैरेक्टर, उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक क्लासरूम में पाते हैं। और एक क्लासरूम जस्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मैं वॉच किया था और बाद में इसको ना अभी अभी पता चलता है कि इसके पास टाइम रिवाइंड की पावर है। Bueller. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America, and there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony, and if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man, and his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? Anybody? चलो अपना does एक not फोटो bode क्लिक well. करते हैं। अभी देखो एक टीचर मुझसे एक क्वेश्चन पूछेगा। Selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits?
तो देखो गाइस, मैक्स खुद से बात कर रहे थे, मैं सोच रहे थे कि मैं टाइम को रिवर्स कर सकती हूँ और मुझे बाथरूम में जाकर उस लड़की को बचाना है टाइम रिवर्स करके। तो यहाँ पे टीचर्स मैं कहता हूँ आई हैव टू यूज द बाथरूम। I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. अबे क्लास के बाद फिर से बात करेगा। Shit. Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need time to who save that created girl. daguerreotypes. राइट A राइट। process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind Hungarian again process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces. अच्छा, making एक कह them रहे extremely आंसर देने के लिए popular from टाइम को 1800s रिवाइंड कर on. लेती हूँ। The first चलो American टाइम को daguerreotype- रिवाइंड करता हूँ। Now, Max, since you've captured our ओके, interest in टाइम को अभी creating मैं one रिवाइंड कर चुका हूँ, conversation, can you इसको please- स्किप करते हैं। हाँ, यही राइट आंसर था। The Daguerrean process, invented by a द French डेगोरियन painter प्रोसेस named इसका Louis राइट आंसर Daguerre था। around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. अपनी Max बकवास is so बंद far करेगा तू? ahead of everyone. चलो, क्लास इसी के You साथ guys एंड don't होता forget है the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. और I'll मुझे fly अभी out to San फटाफट Francisco, बाथरूम where में you'll be जाना feted है। by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to do your homework. अच्छा, पेपर वॉल तो रेड किया, इससे भी बात मैं एक बार करता हूँ फिर से, देखता हूँ क्या Nice कहते हैं। answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. तो देखो, अभी मैक्स इससे बात करती है, बोलती है क्या हम लोग इससे पहले भी बात किए हैं? बोलती नहीं, अभी हमारा फर्स्ट टाइम हुआ कन्वर्सेशन का। मतलब हम लोग सच में फ्यूचर को देख रहे हैं और फ्यूचर देखने के बाद सेम चीज प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। आई हैव टू गो, चलो। I have to go. Too much happening right now. Sure. इससे बात करते हैं और इसको भी स्किप करते हैं फटाफट। Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. स्किप करने का Excuse you. ऑप्शन ही नहीं No, आया है। Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's चलो। future. सुनना जरूरी था। यहाँ पर देखो, शायद से उसने मतलब प्रीवियस टाइम पूछ रहा था एवरीडे हीरो कॉन्टेस्ट के लिए, तो कह देता हूँ मैं इसको अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। I'm not avoiding, just Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. वो यहाँ पर भी रिवाइंड करने की जरूरत है, चलो रिवाइंड करते हैं। अच्छा, अंडो करना है। चलो दोबारा से बात करते हैं अभी इससे। Excuse me, इसको स्किप करते हैं। Photography's future stars avoid handing in her picture. देखो, उसने कुछ कहा था इसके पहले ही अभी, जॉन लेनन सेड। इसे को सिलेक्ट करते हैं। I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. ये कहता है मिस्टर जेफरसन, तुमने आज सभी क्वेश्चन को राइट आंसर दिया है, फायर हो तुम, फायर। बट उसको नहीं पता हम लोगों ने कैसे दिया है, टाइम को रिवाइंड करके। खैर छोड़ो, अभी सीधा चलते हैं बाथरूम में
एंड उस लड़की को अभी बचाना भी है। I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. किस साइड था बाथरूम? I can't tell anybody. इधर तो नहीं है, इधर ही They'll है। think I'm crazy. चलो। Because Max wants everybody to see how hip she is. I have to get my education on. Yo, Daniel. You know I don't take. बाथरूम में तो पहुंच चुके हैं, सीधा एंटर करते हैं। Okay, Max. Retrace every step. अच्छा, मुझे सारे स्टेप वही करने पड़ेंगे दोबारा। I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am. अबे मैं इसको बचाऊं कैसे? Where'd you get that? कुछ तो हिंट दे दो। Come on, put that thing down. I must prevent the blue-haired girl People trying to control me. from getting shot. In hella more trouble for this than drugs. Nobody would. यहाँ पे कोई ever tips even भी नहीं miss है। your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I'm too scared to get near. Holy shit! I can't let this happen. If I can reverse time रुको, again, I can. रिवाइंड करता हूँ फिर से। I can't continue. It hurts too much. People I trying. need a hammer to break it open. ओके, हैमर की जरूरत है। Trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass. चलो, यहाँ पे हमें हैमर भी मिल चुका है, Psycho! Oh, shit. लेकिन शॉर्ट हो चुका है। फिर से टाइम रिवाइंड करता हूँ। Whoa. I'm getting sick. I can't rewind any further. People trying. चलो, इसको तोड़ते हैं और इमरजेंसी अलार्म को बजाते हैं। No way. Don't ever touch me again, freak! लड़की तो यहाँ पे बच गई और लड़का भी यहाँ पे भाग रहा है। That did not चलो, happen. फाइनली इसको हमने बचा लिया Cannot be अपने real. टाइम रिवाइंड पावर की I just मदद saw से। a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? नहीं, मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ। Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. यहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड आता है, इसको डांट लगाता है मैक्स को, और फिर कोई एक इंसान आता है जो खड़ा है टकलू जैसा। ये आता है, बोलता है तुम अपना जाके जॉब करो, मीन्स उस अलार्म को बंद कर दो और इसको परेशान मत करो। तो गाइस, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अब मिलूंगा नेक्स्ट लाइफ इज स्ट्रेंज के एपिसोड के साथ, एक काफ़ी ज़्यादा लंबे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।